Hi guys, good morning. Good morning everyone, and wish you a very happy new year. Hope you all are Good in good morning, health sir. and be motivated Good for the morning, new year sir. this year. Good morning. Yeah. Um, so guys, so yeah, first news in our paper today is about the automobile. But guys, the one who have sent me, majority of you have sent me the news of our automobile. But I remember, when you started the classes, I have told you need to make an automobile report, and the reports are the numbers are out on 1st January itself. Now, if you are giving me this as a news, okay, automobile numbers as a news, it has no meaning, because when it says that Maruti have sold 1,78,000 vehicles, I will ask how many are its exports and how many are domestic. What are the SUVs? Are there SUVs? Is it mini minivans, mini cars? Because all these data are available. December numbers are already out in the press release. It's up on the first uh yeah, it's your first day of every month. So those who have not made the report and you have just written the news is of no use. Let me tell you, because this all number is just an update. We have all these numbers which company gives, which are in the press release. So that is the difference between being an analyst, being writing of making a financial model and writing a report. You have to come up with a report. Okay, I can understand yesterday it was first day of the year. So because you are not working, you think that you should enjoy the day, or we should take a break. I was on break, so you also were on break. So that is not how it is. The commitment is required, because if I was an analyst today in the auto sector, whether it is 1st January, whether it is 15th August, whichever public holiday, national holiday, whatever it is, we have to be ready with the report. And believe me, if all the people, all the analysts were working the entire week. I was on leave, that's a different part. I'm not an analyst anymore. But the people who were, who is in the analyst, well, all were working. 31st night, I called yesterday one of my friend. He was there for a dinner at night. 1 a.m., 6 a.m. he was 7 a.m., 8 a.m. he was in the office with writing the report. So it's up to you that what you do. So first day of the year, I would like to tell you have to pick up. If even now for me, when I was an analyst, I still remember we had a function on the 31st night. I reached home 3 a.m. in the morning, and 8 a.m. I was in the office writing a report. 5 hours, three. Okay, I enjoyed also. It's okay. I enjoyed the 31st, but 5 a.m. I was in the office. Sorry, 8 a.m. I was in the office. Probably 6 a.m. I have to get up, have to get ready. So hardly 3 hours we slept on that day. Anna, the report was ready because it is 1st January. We have to make a report. I don't find this commitment from any one of you. Why so? I specifically mentioned that first day of the month there will be reports which will be made. So if I ask you guys, if I was not there for 3-4 days, where is an update? Hardly one or two guys have sent me the report. The automobile. What about others? It's up to you. Aniket, yeah. Aniket, where was your news about this airport? Business standard, sir. Which page? Which page was it? 1 second. Like that. I missed out. Page number 18, sir. 18. Page number 18. Oh, I missed out this. Oops. Okay. Yeah. Oh. Yeah, Aniket. Can you give me Yes. yeah. The airport one, yeah. So I wrote two news today. Uh, Hello. Am I Yeah, yeah, audible, sir? yeah, you're audible, yes. Yeah, sir. Happy New Year, sir, and good morning, everyone. I wrote two news today. One is on the auto sector, and the second is on the hotel industry. I'll start with the hotel one. So I read in the business standard the hotel led growth in the December boom,
and especially in the hotels situated in the airport areas. They saw an ARR growth of around 15% and a RevPAR in double digits. Secondary, Aniket, can you be a little loud? Your voice is not audible. sure, sir. Secondary airports in metro regions like Navi Mumbai International Airport, which is just recently inaugurated, and the Noida International Airport, which is about to get inaugurated in Jewar, are the new two growth hubs in the hospitality sector. Like the branded hotels in this near region around these both airports are on a low supply chain, around 1500 keys. So there's a clear demand supply gap. To address this, hotels like Sami hotels are coming with around 700 keys and around 6.5 billion capex in the next 3 to 4 years. Along with Sami, Lemon Tree is also coming with 400 keys and Chalet with 280 keys. And Park the Apijay is coming with 250 keys. Yeah. Also around NIA, that is the Jewar Airport, IHCL signed a 150 room Taj Hotel and 74 residents in the Greater Noida Expressway. So in Okay. totality, 2000 plus keys are coming in these airport led locations. And as we saw, the December was the highest tourism peak we saw in the calendar year 25, with hotel occupancies around 70 to 80% plus. ARRs were saw like a 15% YOY growth, and domestic passenger in the air traffic also saw a growth of around 85 to 90% in the load factor terms. And as we see the projections, like the tourism sector is expected to exceed around 620 million by FY30. So a key takeaway for this for an investor is uh, like the hotel sector is in the boom, which is led by a demand supply gap, which will accelerate the pricing power and ultimately the revenues. And the hotel capex will position the hospitality sector in a long term growth engine. Okay. And- So Aniket, this news can be shortened up a bit. बहुत लिखा है. okay. अच्छा, but whatever you have written is fine. Looks a bit more. That's the only reason. But it's better thing. I will say that you should focus on this. That ARR increases to 10 to 15%. So you can put this as a bold thing, as a heading. That Okay. ARR to increase 10 to 15%, and airlines traffic. So airline traffic to project around 650 million. So because of the traffic, passenger traffic increasing, the ARR is expected to increase. Okay. Correct. It should Yes. come in a sync, so that what happens while presenting also, it becomes you to link things, that why will the ARR increase. So, Correct. so quite because of, as new airports have launched, so air passengers travel have also increased. They're projected to increase to 620 million. So once this, they are expected to increase, we expect that the ARR to increase by 10 to 15% on a year-on-year basis. And domestic air passenger, where airlines are operating at 85 to 95. What is this 85 to 95% plus load factor? I think What so. data is this? Domestic air passenger traffic peaked in December. Acha, with peaked in December. Okay. So that can be in a second point. So don't mix it with the ARR. When you're talking about hotels, only talk about hotels. Got it, sir. Okay. Correct. Rest all is fine. So you can little bit. This news is very good and I liked it, but can be told in a much better way. But fine. Whatever you have given is fine. Sir, I have also written the same news. Yeah, Sent you. yeah. Go ahead. You can go with the news. Yeah. Yeah. So, sir, as as in Navi Mumbai, we have an airport now, and since there are less hotel keys around 1500 keys in Navi Mumbai, so there is obviously a supply gap in this, and so because of that, luxury hotels uh, are uh, building hotels there. And so there is Sami Hotels that plan 700 keys with approx 6.5 billion in capex. Radisson Group signed a 350 key hotel operational by
2030, while Lemon Tree also has 400 keys in pipeline. Same goes with Chalet with 280 keys, Park Hotels with 250 keys. And also there is also Noida Airport, uh, and because of that, IHCL has signed 150 key uh, signed 150 keys hotel, and so on. Also, See now, Om, what is the problem now? You have written it so big that you are not able to present it. You know, I have told you break it down. Whatever you want to break it down to 2 to 3 lines, and 2 to 3 lines should be a WhatsApp message, not something that it should be a web message. I will show you once again. When I see a message on the web, I can see it's okay. When I see in the web, it's okay. But when it comes on reading on a mobile, it's difficult. See, read your message is totally fine. I think that you have also written it on your web only. Okay, this looks perfect. But now, when you talk about your mobile, it should be something. On my mobile, it looks something like this. Even it looks something like this. Now it becomes difficult for you also, you know, to recollect this thing. See why you have to see. Question was the new metro airport triggers hotel expansion in Navi Mumbai as just one. Fine, perfectly. This is fine. As it has just 1,500 case. Now, who are doing it? Navi Mumbai currently has 1,000 case branded hotels. Highlighting a sharp demand supply mismatch. Fine. Stop it over here. Okay, now second point is proximity to corporate hubs, MIC and leisure destinations like Lonavala is driving hotel operators to enter under-penetrated zones. Now this is not related to this, correct? The airport one. Am I right? Yes, I got it. So why is this, you know, a part of? Because what happens, this is taking you off the topic. Right. Okay. Now you can put this at the end of your news. Okay, you can, let's say I put it this. Then first, if this is your heading, okay, perfect. This was perfect. Then Navi Mumbai has only 8. So this also you can, you know, already it's written over here. See, Navi Mumbai has just 1,539 branded keys despite the NMI launch. So now the same thing you have written over here. Yes. Correct. So this thing you can say it while saying that, sir, it has led to a sharp supply demand mismatch, a supply demand gap. No need to write it over here. This was a major heading. Now what is doing, or you can write it to meet the supply demand gap. Supply demand gap. What is doing? Hotel chains are announcing over 2,500 new hotels near EI, near new Navi Mumbai airport, and this is NI. This is your Noida, correct? This could have been your heading, correct? Correct. Link ho raha na, sab things are linking, right? This is second paragraph. Now which hotels are doing? Major players are committing capital expansion scale, such as Sammy with a 700 key. Okay, stop it over here. See, whenever you say one point again, stop it, because you are talking about Sammy hotels. So Sammy is developing, okay, 700 property key, fine. Now come on, next point. Now who is doing second? Radisson. Radisson assigned an operating key. Because this becomes easy while you to speak also. Okay. Then it was Lemon Tree. You can specify this. Lemon Tree, Chalet and Park hotels are expanding near Navi Mumbai. Achha, what about this then? Radisson and all? Sammy Hotels plans a key property. Where is this? As I mentioned.
Okay, Bird Group is developing a 10,000 banquet and rising demand from corporate travelers. Okay, IHCL sign a 150 key Taj hotels while Radisson is scheduled to operate. And now, where is this all hotels happening? Where are this all hotels happening? Aniket, you have also read it. Where is this happening? Is it related to the air passenger? Yeah, sir. IHCL, have they mentioned where are they signing? They have signed a 180 Taj room with. Where is this? What? Sir, exact That's location they have not mentioned. No, I just mean Gurgaon. I was just confirming, is it near the airport or is it something somewhere else? Okay. Or else this thing might be a part of your तो वो this गुड़गांव वाले में साइन करा है, जेवर में, नोएडा. गुड़गांव में था. Okay. Just mention it. ये क्या जो कितने hotels ने कहाँ पे किया है? Or else this might be a reason of MIC activity and leisure destination like Lonavala driving hotel operators to enter under-penetrated zones. So this, ये दूसरा news है. These are two different news which is there in the newspaper. हाँ, रोसेट ने तो बोला है नहीं, NIA के यहाँ पे है transit. Then Sammy, okay. Rest all, I didn't read this news. The Taj branded along the Noida Greater Expressway. Fine. So this you mentioned on Om. No? Yes, sir. They have announced near airport only. Near? These hotels, Sami, Radisson, and Lemon Tree. Sorry, I didn't get you. Sami, Radisson, and Lemon Tree. So they are near airport only. They're planning to set up. No, which I was saying the Navi Mumbai or the Noida one. Navi Mumbai, sir. Sami ने भी किया क्या Navi Mumbai के तक? Yes, sir. Okay, so you can club this all. I three, all these are a part of Navi Mumbai. Fine. Now नोएडा के बारे में ताज का तो नोएडा के में बात करो कि नोएडा में कहाँ पे किया है, नोएडा में कौन कौन हो रहा है. सो यू कैन स्प्लिट दिस अप. दो चीजें है ना, एक न्यूज को यू कैन ब्रेक इट इनटू सो मेनी पार्ट्स, सो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू व्हाट इज इट प्रेजेंट इन द इंटरव्यूज. वरना ये न्यूज तुम भूल जाओगे. बिकॉज आज मैंने नहीं पढ़ा, आई मिस दिस न्यूज, समहाउ आई मिस दिस न्यूज. बट इफ आई वुड हैव रेड, नो, मैंने ऐसे लिखूंगा क्योंकि मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो दो एयरपोर्ट खुल रहे हैं, नोएडा में, नई मुंबई में. नोएडा में कौन कर रहा है, नई मुंबई में कौन कर रहा है और कितने कर रहे हैं, इतना ही तो न्यूज है. There's nothing more than that. Yes. And then it comes about your industry part कि ये सबसे क्या हो रहा है. Then you talk about numbers or specific industry wide numbers. Airport led driving double digit growth. फिर air passenger का भी दिया था. Air passenger is growing RevPAR. This is all you can write it. So airport led hubs drive double digit RevPAR as India targets 620 passenger vehicles by FY30 and LDF1 which saw. So see ये एक part हो गया. ये H1 पे आ गया ना. So again it should be different part. पैराग्राफ डालो वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम बात करते हैं, वी डोंट से दिस मच इन वन गो. इतने एक साथ बोलते हैं क्या? I thought वो और एक बढ़ जाएगा पैराग्राफ. That's why. नहीं तो पैराग्राफ नहीं है ना वो, इट इज वो फिर तुम्हारा हेडिंग नहीं हुआ, वो तो पैराग्राफ से हुआ है फिर. Right. हेडिंग तो हमारा एयरपोर्ट लेड, हेडिंग तो इतना ही होगा, एयरपोर्ट लेड हब्स ड्राइव्स डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया, अगर डलना ही है तो. Yeah. बट ये सब तुम्हारे पैराग्राफ, क्योंकि इतना बड़ा तो हेडिंग नहीं होता ना. You Right. cannot have this much of big heading. So heading भी लिखना एक आर्ट है, वो किसको आता है किसको नहीं आता है. But if you don't have an heading, at least try to mention it. Okay, मतलब try to write in paragraphs. That is very easy way to do it. And then this can be written at the last. कि MICE activity has also seen hotels driving operators into under-penetrated zones. Okay. Okay. Yes, sir. I'll keep it in mind. Make sure you do that because अच्छी न्यूज़ है ये. मतलब ये तो पूरा न्यूज़ तुम इसमें भी बोल सकते हो ना. इन आर इन्वेस्टमेंट थीसिस भी सब डाल सकते. नई मुंबई से एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं 2, और जैसे एयरपोर्ट्स खुलेंगे तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट्स और मे बी पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ने वाले हैं. एंड वी एक्सपेक्ट ARR टू इंक्रीज इन दोज एरियाज एज वेल. Yes, sir. Okay. Yeah, Dishank, what is your news? Good morning, sir, and Happy New Year. Sir, my news is based on the last year auto registration. It's in page 2, I think. Ek minute. That is automobile तो है. Fine, yeah, go ahead.
Sir, last year, Indian auto market registered approx to 28 million auto registration, which led by Maruti Suzuki and followed by Mahindra and Mahindra. Sir, as we compare by comparing last year, Maruti Suzuki increased by 8.8%, Mahindra increased by 20%. Sir, major reason by increasing the sales for by sorry behind the sales of Maruti Suzuki is that it's low cost maintenance, easy availability, or we can say that exports. Nearly Maruti contributes approx 17% of the exports last year of its total sales, which is in 2.35 million units. And the major country are are Oman, UAE, Saudi Arabia, Nepal, Mexico, and some Latin American countries. And so in third, the Tata Motors increased by 5.6% year on increase. So the major reason behind 5.6% is its services. Like its service is not at up to the mark after sales services of Tata Motors. That's why more people are relying on Maruti as compared to Tata. And Okay. so in fourth position, there is Hyundai Motors, which is showing minus 0.3% sales as compared to 24. That's all, I guess. So Dishang, you need to have a report on this. ये तो सिर्फ अपडेट हो गया, कुछ मतलब नहीं Okay, है सब चीजों का, okay, because ये मैंने भी पढ़ा है. What update you have given? okay. What is the analysis that you have done? That is why na, your report is important. Whenever it's the first day of every month, you have to ready with a report. These things have no value, zero value. जो न्यूज में ये उनके लिए है जो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. If you Okay, want to sir. be an analyst, you have to handle, because this is just an update कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्यों हुआ ये, हमारे 8% से मेरे को था कौन से प्रोडक्ट्स ग्रो हुआ है इसमें. सर मारुति में हाँ, सर मेजरली सर ग्रैंड विटारा. कितने सेल्स होते हैं ग्रैंड विटारा के? सर सर अप्रोक्स सर मेरा एक फ्रेंड है ये लोकल नेक्सा में. सर उसने बताया कि अप्रोक्स उसने लास्ट वो नहीं, मंथ. पूरा डेटा अवेलेबल होता है क्या? फ्रेंड ने बताया, इज ऑल डेटा इज अवेलेबल. ऑटो पंडित पे पूरा डेटा अवेलेबल. हैव यू गॉन टू द एनुअल रिपोर्ट, द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप? नो सर. तो सब दिया है उसमें, फ्रेंड के बताने की क्या जरूरत है उसमें. डू यू नो हाउ मच सर परसेंटेज ऑफ मारुति सुजुकी's रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ग्रैंड विटारा? कितनी टोटल 17 लाख में से ग्रैंड विटारा कितनी बिकती है? ये महिंद्रा में 20% है, कौन सा वेरिएंट बड़ा है? ओके सर. So if you don't have, अच्छा guys, I will say this data is important. ये data usually मिलता नहीं है. So I will say keep this data with you. या screen ये आज Business Standard में आया है कि पेट्रोल, तो this we can take it as a a ballpark number. Out of the 17 lakhs cars sold, sorry, out of 34 lakhs cars sold. So India में approximate, अच्छा चार लीडिंग OEMs की बात की है, 34 lakhs गाड़ियों में, sorry, this is full. So petrol and CNG is around, मतलब CNG वेरिएबल का 6,34,000. मैं क्लिक के रखता हूँ 1 सेकंड. कैलेंडर में पूरे साल जो गाड़ी बिकी थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. पेट्रोल CNG और 6,34,000. पेट्रोल और डीजल का शेयर ज्यादा होता है, 13 लाख. पेट्रोल इथेनॉल आई थिंक इट इज सेम ओनली, पेट्रोल इथेनॉल एंड पेट्रोल, ये अभी जो नए नए आए हैं E20 कंप्लाइंट. पेट्रोल हाइब्रिड, ये तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स है वो 2 लाख गाड़ियां बिकी, उसमें सिर्फ फिलहाल इंडिया में 2 ही है प्लग इन हाइब्रिड्स. अच्छा, anyone over here, what is the difference between
petrol hybrid and plug-in hybrid? Anyone? So in plug-in hybrid, there's also option to charge the car. Sorry. So in plug-in hybrid, there's option to charge the car, so they can run on only electric range. Whereas in petrol hybrid, only the fuel can be used to make electricity, not the manual charging way. Okay, fine, 1 second. So guys, now there are so many differentiation of cars जो तुमको पता होना चाहिए एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया। तुम इंडिया में तुम्हारी खुद की भी गाड़ी होगी, तुमको पता होना चाहिए कि ये सब कितनी गाड़ी बिकती है। why are these things important? Because in the future you will also have to take decisions based on, you don't believe when I was a pharma analyst कितने बार ऐसा हुआ है कि घर पे दवाई ना कुछ हुआ था तो आई वॉज देयर टू रिकमेंड द दवाई, मुझे पता है इससे ये होता है, बिकॉज मैं फार्मा एनालिस्ट था उस तभी टाइम, बीइंग माय वाइफ बीइंग एन एम फार्म, तो आई यूज्ड टू एबल टू टॉक विथ हर दैट अरे तुम एम फार्म से हो तो क्या हो गया, मतलब आई ऑल्सो नो समथिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो एनीथिंग, मैं फाइनेंस से हो तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। सो ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। एवरी टाइम आई टेल यू नो ब्रिंग द जनरल नॉलेज इन योर एनालिसिस, वरना सिर्फ एनालिसिस करने जाओगे तो वो सभी कर रहे हैं, तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। नाउ इन दिस पेट्रोल, सीएनजी, इथेनॉल, ऑब्वियसली दिस आर ऑल पेट्रोल व्हीकल्स। ये हाइब्रिड भी है। नाउ ये पेट्रोल हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, plug-in hybrids, electric, so usually petrol and diesel, last is diesel. So now petrol is the mild hybrid जो आज नए, it is only used for वो start stop वाले है function या फिर एक boost देने को गाड़ी को। now if you see Maruti car, the 3-liter car with an electric engine in that to give a boost to them, तो क्या होगा इसमें थोड़ा पेट्रोल कम यूज होता है। मतलब let's say there are 2 लीटर की गाड़ी है, सॉरी 1 लीटर की गाड़ी है, उस पर तुमने rather than giving 1.5 लीटर कार, मारुति अगर पता होगा तुमको तो मारुति ने 1 लीटर इंजन बनाना चालू किए, if you know 1 लीटर 1.2 एंड 1.5 आता है। 1.5 इज द एक्सपेंसिव, वो होंडा सिटी एंड ग्रैंड विटारा वो रेंज से चालू होते हैं, क्रेटा के रेंज से। सो जो बलेनो होती है प्रीमियम हैचबैक्स है उसमें 1.2 लीटर के इंजन आने के, एंड जो नॉर्मल स्विफ्ट ऑल्टो होती है उसमें 1 लीटर इंजन है। नाउ व्हाट हैपेंस, वो लोग ने जो बलेनो है या फ्रॉन्क्स है उसमें भी वो लोग ने 1 लीटर इंजन ऐड करना चालू किया, इवन फॉर दैट्स इन ब्रीजा एज अ 1 लीटर इंजन। उससे क्या होता है तुम्हारा माइलेज ज्यादा मिलता है तुमको क्योंकि इंजन छोटा है, बट पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है बिकॉज द एडिशनल पावर इज गिवन बाय अ बैटरी इन इट, इज जस्ट टू गिव अ बूस्ट। ओके, देन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स, दिस इज कॉल्ड माइल्ड हाइब्रिड। ये तुम पेट्रोल हाइब्रिड में माइल्ड हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको, तो माइल्ड हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स ईवी में स्पेसिफिकली देयर इज एन ईवी मोड एज वेल। मतलब तुम जो अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में सिर्फ देयर इज योर ग्रैंड विटारा एंड वो हाई राइडर दो ही है, एंड होंडा सिटी की वो होंडा सिटी है हाइब्रिड। तो उसमें क्या होता है कि 30-40 किलोमीटर्स नॉर्मल रेंज पे द कार रन्स ऑन ईवी, इलेक्ट्रिक पे, एंड वो ऑटोमेटिक फिर 30 या डिपेंड ट्रैफिक पे या हाईवे पे 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हो गए उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट होती है, एंड इट गोज ऑन जब तक वो वापस चार्ज नहीं होती। पेट्रोल ऑल्सो हेल्प्स हिम टू चार्ज, तो उसमें क्या होता है तुमको माइलेज थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसमें लोअर इंजन होते हैं, इसमें माइलेज थोड़ा, इसमें इंजन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पर इसमें माइलेज ज्यादा मिलता है। हाँ, बट इसमें एक चीज कॉम्प्रोमाइज होती है, इज बूट स्पेस, इज बिकॉज इसमें बैटरी थोड़ी बड़ी होती है, बैटरी छोटी होती है। Now what is plug-in hybrid? Now plug-in hybrid is a new concept in the world. जैसे ये पेट्रोल सीएनजी में क्या है guys? What is the difference? पेट्रोल सीएनजी एंड सिर्फ पेट्रोल में? Or like Sir, in there is an extra CNG tank in the car along with petrol. करेक्ट, देयर इज एन एक्स्ट्रा सीएनजी टैंक अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल। तुम पेट्रोल पे भी चला सकते हो, सीएनजी पे चला सकते हो, करेक्ट। सेम विथ प्लग इन हाइब्रिड, तुम इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हो, तुम पेट्रोल पे भी चला सकते हो। जैसे सीएनजी में पेट्रोल खत्म हो गया, सॉरी सर, सीएनजी खत्म हो गया तो हम पेट्रोल पे चला सकते हैं। हाँ, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो सीएनजी पे नहीं चला सकते, ओके, बिकॉज वो पेट्रोल इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द कार। सेम वे ओवर हियर। सो इसमें भी तुम्हारा टिपिकल चार्जिंग के केबल जाते हैं इन प्लग इन हाइब्रिड्स। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, इसमें सिर्फ तुम्हारे हाई एंड कार्स ही आते हैं। आई थिंक बीएमडब्ल्यू की सिर्फ है XM जो है, एंड लैंड रोवर की एक है द लैंड रोवर SV विच कम्स इन प्लग इन हाइब्रिड्स, विच इज कॉस्टिंग लाइक 3-4 करोड़ की गाड़ियां आती है वो।
तो अभी तक ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है अभी के लिए. करंटली द टेक्नोलॉजी इज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स. ये टेक्नोलॉजी आज चल रही है. ये तो प्योर इलेक्ट्रिक है जो हम सबको पता है. एंड दिस इज योर डीजल व्हीकल्स. सो इफ सर सर पेट्रोल एंड इथेनॉल वो सेम है. पेट्रोल अभी नया है ना, E20 जो आया है वो सेम है यस पेट्रोल. सर. ये पहले के मॉडल्स थे जो E20 कंप्लाइंट नहीं है. अभी वो पेट्रोल इथेनॉल E20 कंप्लाइंट है. अभी देखो कि जो पहले के जो मॉडल्स है ना 23 के 23 यस 24 के, उसमें थोड़ा E20 कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो तुम्हारा माइलेज थोड़ा E10 कम होता है. ब्लेंडिंग E10. ब्लेंडिंग, हाँ. तो थोड़ा उसमें माइलेज हमारा कम हो गया ओवरऑल. तुमने देखा होगा काफी टाइम, तुमने तुम्हारी भी गाड़ियां होगी ना, तो देखो अभी अगर ट्रैक करते होंगे तो कि यस थोड़े बहुत माइलेज अभी कम हो चुका है गाड़ियों का, बिकॉज ऑफ वो पहले से E20 सॉरी इथेनॉल कंप्लाइंट नहीं है वो. फटाक ओवरऑल 39 लाख. अगर इसमें हम पेट्रोल की बात करें तो आई थिंक दिस आर ऑल पेट्रोल ओनली है. तो CNG की बात कर रहे हैं तो CNG शेयर इज अराउंड, सब याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 16% गाड़ियां इंडिया में इलेक्ट्रिक दी है. इलेक्ट्रिक कार कॉन्ट्रीब्यूट जैसे बोला 4%, इट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 4% टू द एंटायर मैसेंजर. इसमें फिर कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स. सेल जैसा हो गया है, 30% से ग्रो हुआ है, 50% से ग्रो हुआ है, इट डजेंट मैटर. Obviously, petrol cars is around 53%, डीजल इज 20%. अच्छा, ये भी माइल भी पेट्रोल में ही आते हैं, तो ऑलमोस्ट 58%. 60% गाड़ियां इज ऑन पेट्रोल, 20% इज ऑन डीजल, 80% हो गया. बाकी के 20 में 4% ऑन इलेक्ट्रिक, 3% इज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. सो दिस इज ग्रोइंग, दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग इन इंडिया. ये भी पेट्रोल गाड़ी है बट इट इज ग्रोइंग एट अ हायर पेस. एंड माइल हाइब्रिड आजकल सब माइल हाइब्रिड्स है. तुम्हारे ग्रैंड विटारा हो गई, तुम्हारी फिर फ्रॉन्क्स हो गई. इसका मैं बता, फ्रॉन्क्स ऑल्सो कमिंग विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. तो ये याद रखना. अच्छा, फॉर योर जनरल नॉलेज, आज मिंट में अगर तुमने पढ़ा होगा, देयर इज समथिंग डिफरेंट, और एक इसमें कुछ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. JSW Motors and Mahindra are open to adopting a range extended. ये कुछ नया है, कुछ अभी तक आया नहीं है. They are planning. Now, what is it is called? REX. Range extended hybrids are also driven by an electric motor. Here now, what is the definition? Are always driven by an electric motor, but carry a small internal combustion engine whose sole role is to generate electricity when the battery charge runs low. तो प्लग इन हाइब्रिड में क्या था, बैटरी पे भी चलती है, तुम्हारे पेट्रोल पे भी चलती है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाज समथिंग वेयर दोनों पे, मतलब बैटरी पे कम ही चलती है, पेट्रोल पे ज्यादा चलती है. ये ऐसा होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होगा, चलेगी तो इलेक्ट्रिक पे ही, बट उसको चार्ज करने को इट विल यूज पेट्रोल. लुक्स अ गुड कंसेप्ट, जो अभी तक आया नहीं है, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं है. दिस इज सेइंग दैट दे आर वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट. ऑल्सो सी रेव्स आर इलेक्ट्रिक ड्रिवन ही होंगे, पर उसमें क्या आता था, गुड्स एंड सर्विस एक्ट GST टू बी केप्ट एट पार विथ 5%, ऐसा उन्होंने बोला है. तो सेम लाइक प्लग इन हाइब्रिड, सेम कंसेप्ट, बट प्लग इन हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक तुम चार्ज नहीं करते. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ही कंसेप्ट होगा, बट इलेक्ट्रिक पे ही चलेगी, पेट्रोल विल बी जस्ट एन बैकअप ऑप्शन. लुक्स अ गुड थिंग कि अगर कुछ ऐसा आता है तो इंडिया में. ओके, तो याद रखना ये सब चीजें अपने भी लाइफ में काम में आते, बिकॉज नो एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल ऑल्सो बाय अ कार, एंड होगी भी तुम्हारी. ऑब्वियसली वेरी लेस पीपल इन इंडिया हु डजंट हैव अ कार. This is the new technology that you should so for me, major technology is this. If I want to buy a car, I will buy a plug-in hybrid जहाँ पे मेरा पेट्रोल भी है एंड मेरा EV भी है, और अभी तक वो इंडिया में आए नहीं है. They are very expensive car. Given a choice, I will go for hybrid. Electric is not in my radar as of now. तुम्हारे भी कितने लोगों के radar पे होगा भी नहीं इलेक्ट्रिक कार. So याद रखना, 60% पेट्रोल, 20% डीजल, 4% इलेक्ट्रिक, 4% approximate, 5% is around strong hybrid. EVs, strong hybrid, and your electric. This comes around 7 or 8%, 4% electric. Plug-in hybrid is hardly numbers which are sold. अब ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि मैं एनालिस्ट हूँ? Just because I'm an analyst? मुझे भी ये पता नहीं था, मैंने आज ही पेपर में रीड किया ये. आई वॉज नॉट नोइंग दिस, बट ये कोई पेपर में नहीं है, सिर्फ मिंट में ही आया है. क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट, तो दैट इज वाई एनालिस्ट को वैल्यू क्यों मिलता है. वाई एनालिस्ट हैव हायर वैल्यू? बिकॉज द वे यू टॉक इन फ्रंट ऑफ समवन. आज किसी को पता था क्या रेफ के बारे में? एनीवन ओवर हियर न्यू अबाउट दिस टेक्नोलॉजी? आई एम श्योर तुम्हारे किसी एनालिस्ट को ही बोलो, उसने अगर ये न्यूज पढ़ा नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा. इफ इज नॉट रीडिंग न्यूज पेपर्स और उसके रीडिंग हैबिट ज्यादा नहीं है तो गो एंड आस्क टू एनी एनालिस्ट को पता है कि ये क्या मॉडल है. तुम्हारे भी बताओ, किसी जो होगा सीए होगा, सीएफए होगा, एमबीए होगा, उसको पूछो जाके, पता था तुमको रेफ क्या होता है? उसमें महिंद्रा एंड जेएसडब्ल्यू की बात कर रहा है. एंड यू हैव टू नाउ गूगल इट कि क्या कर रहे हैं लोग इसमें, वेयर आर दे प्लानिंग टू लॉन्च. इफ दिस इज लॉन्च, प्रोबेबली दिस इज अ गेम चेंजर ना, इलेक्ट्रिक टोटली. फिर इट इज गुड ना फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो उनको इलेक्ट्रिक, मुझे नहीं लेना इलेक्ट्रिक. मुझे अच्छा है अगर पेट्रोल पे चार्ज होती है तो. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम गोइंग आउट. मैं तो पहले आई विल बुक द कार फर्स्ट, क्योंकि इट विल सेव माय कॉस्ट, प्लस जीएसटी इज 5%. ओके, so now anyone else apart from auto, क्योंकि ऑटो में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं वो सब. जब तक यू डोंट हैव द रिपोर्ट, इट इज नॉट, इट इज डजंट मेक सेंस अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस. ये डेटा इंपॉर्टेंट था जो मुझे बताना था. हाँ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के भी यार रजिस्ट्रेशन, आई थिंक एफई में अच्छा था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देयर वाज गुड दैट टीवीएस मोटर इज हैविंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन ईवीज. किसने लिखा है क्या ये? Does anyone else apart from auto? Ankita, you have some? मेरा एक यस डाउट था, सर वो मैंने कल M&M का जो नंबर्स लोग ने रिपोर्ट किए, उसमें से जो टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स है, उन लोग ने एक्चुअल टोटल व्हीकल सेल्स डाल दिया, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सीवीज एंड एक्सपोर्ट्स. आप समझे सर पेपर मेरी में तो बात? पेपर में तो पढ़ना ही नहीं है, पेपर के न्यूज आज सर है नहीं. पेपर की नहीं, महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एनएससी बीएससी के जो उन लोग देते हैं ना हाँ कंपनी हाँ अपडेट के बारे में 1 तारीख को. हाँ हाँ. तो उसके अंदर सर मिस रिप्रेजेंट कर दिया उन लोग ने. जो टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स जिसमें डालना है वो Okay. डाले हैं, और फिर उसकी जगह मतलब एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सेल्स डाल दिए. जो कमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीलर सेल्स जो महिंद्रा करता है वो हाँ वो हाँ, वो फिगर निकाला जी. और पैसेंजर व्हीकल टोटल सेल्स दोनों मैच कर रहा है. अच्छा, सो आप ओपन करोगे, मैं आपको दिखाऊँ क्या एक बार? एक सेकंड, हाँ मैं करता हूँ. फिर ये तो Sir, on the second paragraph, you can see utility vehicles sold हाँ 50,946 and overall 86,090. That is the total number of vehicle that हाँ, टोटल Mahindra नंबर sold, ऑफ, not just हाँ बराबर. utility vehicle. यस हाँ, तो बराबर ये तो Sir, सही है ना. second तो paragraph में, sir, second paragraph में. न्यूट्रली व्हीकल्स महिंद्रा सोल्ड 50,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट, 20% ग्रोथ एंड ओवरऑल 86,000. हाँ, तो वो सर ये अलग है. 86,000 यहाँ पे ना महिंद्रा एक्चुअल में खाली यूटिलिटी व्हीकल सेल्स फिगर डालता है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट. और ये नंबर जो है ना वो कमर्शियल व्हीकल का भी इंक्लूडेड है, कमर्शियल व्हीकल एंड थ्री व्हीलर का भी इंक्लूडेड है. बिकॉज अब टोटल सेल्स देखोगे, टोटल हाँ सेल्स उतना करेक्ट, जा हाँ रहा है सर. करेक्ट, बराबर है सर ना. तो यहाँ पे सिर्फ यूटिलिटी दिया है ना 50,000 ये. सर ये डोमेस्टिक का दिया हुआ है, एक्सपोर्ट का उसमें से माइनस करके निकालते थे. सर एक्सपोर्ट्स पीवी है ही नहीं. सर ये डोमेस्टिक हाँ, जो दिया हुआ है एक्सपोर्ट्स फिफ्टी पीवी है ही थाउजेंड नहीं उसका. महिंद्रा रहता है ना एक्सपोर्ट्स, करता है सर क्या? करता है महिंद्रा एक्सपोर्ट्स. सर करता है वो यूटिलिटी. सर आप एक मिनट खाली वो ओपन करिए ना. हाँ, ये 50,000 जो है ना, 50,946 ये डोमेस्टिक सेल्स है. और वो 86,090 जो सेम पैराग्राफ में है, वहां पे महिंद्रा टोटल सेल्स डालता है इंक्लूडिंग दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स. एंड ओवरऑल 86,000 व्हीकल्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स. सर आप एक दूसरी रिपोर्ट खोलेंगे, आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा. डोमेस्टिक सेल्स फॉर, ओके, पहले का खोलो क्या?
लास्ट ईयर का, लास्ट मंथ का। हाँ सर, ये फर्स्ट 12 है ना, 112। सर इसके अंदर देखो डिफरेंट है, स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ में सर। सर यूटिलिटी व्हीकल सोल्ड एंड ओवरऑल सेम ही तो है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, क्या अलग है? सर फिगर मैच करिए ना आप, टोटल व्हीकल जो सेल्स दिखा रहे हैं 92,670 टोटल सेल्स है। हाँ और महिंद्रा का पीवी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट का सेल 57,000 दिखा रहा है। और वो उसमें आप जाके मैच करिए वो वाली फाइल में, टोटल व्हीकल का 86,000 सेल्स है, और यहाँ पे यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट का भी सेल्स दिखा रहा है 86,000। सेकंड पैराग्राफ में, अच्छा ओके। सर यहाँ पे खाली हाँ यूटिलिटी गलत सेगमेंट का हुआ, सेल्स दिखाते हैं, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स ओके दोनों। हाँ एक सेकंड। तो लेट्स एक सेकंड ना, इफ दिस इज एन इशू, but ये टैली होता है क्या नंबर्स वैसे? सर मैं टोटल, बहुत ट्राई दिस करके नंबर देखा, इज नहीं हो रहा है important, टैली। this number is important where it sold around 86,000, okay? Let's say total sales 86,6090 है, एंड इसमें से यूवी सेल्स, तो यहाँ से लिखते हैं यूवी सेल्स 5946, यहाँ से डालते हैं, ओके। यूवी 946 एंड उसके कमर्शियल के 2720 2720 22,066,7538. This is commercial and premium. UV मतलब इनके टोटल पैसेंजर ही होगा, this 50 plus this 283. सर एक्चुअल में महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स का फिगर नहीं देता है, तो टोटल एक्सपोर्ट्स में से ये माइनस करते थे पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स, तो फिर उसमें हाँ से ये मिलता था कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स। करेक्ट, हाँ तो सीवी टोटल एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट, फिगर दिया नहीं है, सो वी कांट कंप्यूट ठीक है पैसेंजर हाँ, व्हीकल तो फिर सेल्स। मत डालो फिर, अज्यूमिंग कि, और एक्सपोर्ट कितना है, हार्डली 3-4% तो होगा ना महिंद्रा का, कम है? सर अप्रोक्सीमेटली 3% के अराउंड है। 3% है ना, तो ठीक है ना, ठीक है फाइन। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, लेट मी सी, ये सब नंबर्स सर टैली ऐसा करना। होता है क्या कि डिफरेंट नंबर ऐसा कभी करते हैं? हाँ नहीं देना होगा उनको, टोटल एक्सपोर्ट्स क्या है, टोटल दिया ना इसमें, टोटल व्हीकल्स इंक्लूडिंग एसयूवीज एलसीवीज थ्री व्हीलर्स एंड एक्सपो, हाँ नहीं दिया होगा। अबव सेल्स इंक्लूड बोलो मैं, अबव सेल्स, हाँ इस बार नहीं दिया होगा उन्होंने एक्सपोर्ट नंबर। ठीक है, तो अज्यूमिंग इट्स डोमेस्टिक ओनली ना, 20,000 बोलो कि, अज्यूमिंग डोमेस्टिक ही रख दो, एक्सपोर्ट छोड़ दो। तो फिर मॉडल में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा। अबव एसयूवी सेल्स इंक्लूड सेल्स मेड बाय सब्सिडियरी बाय कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स, वे एक्सपोर्ट नंबर्स नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, तो देख लेना ओवरऑल एक्सपोर्ट कितना, टोटल एक्सपोर्ट्स में लास्ट ईयर पीवी एक्सपोर्ट कितने थे, और उसको डिवाइड कर देना लास्ट ईयर, अजम्पशन बेस पे। सर कभी ऐसा रहता है कि लोग ने बाय मिस्टेकली कुछ ऐसा डाल दिया और फिर बाद में उसके बारे में अपडेट बाय करते हैं? मिस्टेकली हो सकता है, कभी कभी होता है, तो टोटल बाद में व्हीकल अपडेट करते हैं क्या सर ये फिगर के बारे में? करते बिकॉज शायद सर से ये हाँ, ऐसा महिंद्रा का मेरे को 2-3 बार में मिला है ऐसा। या फिर उनको देना नहीं होगा नंबर, ऐसा भी ना कि नंबर से टैली हो रहा है, उनको नंबर देना नहीं होगा, ऐसा होता है कभी कभी, दे डोंट वांट टू गिव एक्सपोर्ट नंबर्स। अच्छा सर, मतलब हर बार में दिए खाली एक टर्म में देना, ऐसा करेंगे? नहीं हाँ, क्योंकि उनको होते हैं ऐसे, कितने बार होता है कि ये लोग नंबर्स नहीं देते हैं, उनको लगता है कि कम हुआ होगा ना एक्सपोर्ट, इसलिए देते नहीं होंगे, तो वरना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुआ, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे फिर क्वेश्चन पूछते हैं वो, या फिर नेक्स्ट मंथ में शायद से। अभी देखो यहाँ पे ना वाईटीडी दिया है ना, वाईटीडी इसमें भी नहीं दिया है। तो वो परसेंटेज तुम ले सकते हो अप्रोक्सीमेट कि एक्सपोर्ट कितना परसेंट होता है महिंद्रा के।
50,000 डोमेस्टिक, 50,000 डोमेस्टिक दिया तो अज्यूमिंग डोमेस्टिक ही लेना, डोंट कंसिडर एक्सपोर्ट। तो ये याद करना कि ये जो एक्सपोर्ट्स था 2820, उसमें अप्रोक्सीमेट महिंद्रा कितना पीवी एक्सपोर्ट करता है, वो लिख देना यहाँ पे नंबर लास्ट ईयर से। ओके ओके सर। सर अगर फ्यूचर में कुछ क्लैरिफिकेशन जाएगा जैसे अगले 2-3 दिन में, तो वो कहाँ पे आएगा उसका डेटा? इधर ही आता है, अगर होता है तो यहाँ पे ही आ जाता है, वही सेम सेक्शन कोऑपरेट सेम सेक्शन प्रेजेंटेशन में। में। सेम इसमें और एक अपडेट आ जाता है, अगर आता है तो यहाँ पे और एक फाइल आता है अपडेटेड और क्वार्टरली नंबर्स करके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay. Yeah, Ankita, anything on the lab grown? Yes, sir. Yeah, I have like made the news about the lab-grown industries. So shall I start? Yeah, start. Okay. So India's lab-grown diamond market is entering a rapid growth phase as there are like various reasons for that. First is the rising demand and increasing funding and increasing rates of like other jewelries, like other elements like gold, silver, and etc. And the entry of major jewelry retailer is boosting the awareness, also validating the category. Like Titan has entered the segment with its new brand Beyond, launching its various stores in Mumbai and also planning expansion in Delhi. Also, the numbers that are given by GY is like around 530 crore series. They are like into expanding omni channel presence. अंकिता, And this is not yeah, looking exciting, मतलब आप जो बोल रहे हो, हाँ, आपसे लगा रीड कर रहे हो, ओके, 2-3 पॉइंट ही बोलो ना बस, दैट्स इट, ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज है, हाँ, मैं भी रीड बहुत कर अच्छे से सकता, पढ़ा, हाँ, 3 ही लाइन बोलो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए ओके। मुझे। तो हाँ, वही लैब-ग्रोन जो डायमंड है, मतलब वेरियस जो रिटेलर्स है लाइक जीवा है, फिर आपका सॉलिटेरियो है, इंडिविजुअल का मतलब ये है, फिर टाइटन है, रिया डायमंड्स है, लाइमलाइट डायमंड्स है। दे आर आल्सो लाइक ग्रोइंग इन दिस, लाइक दे आर आल्सो इंटरेस्टेड एंड दे आर आल्सो प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन इन दिस लैब ग्रोन डायमंड्स, बिकॉज देयर आर वेरियस रीजंस लाइक एक चीज ऐसे होता है कि वहाँ पे लाइक वी आर मोर इनटू diamonds and other things which are like less costly. The only difference between the lab grown diamonds and actual diamonds is there is a bit of like difference of nitrogen, and which also cannot be like cannot be the difference cannot be spotted naked eye. So I think there is a like scope of growing in the lab grown diamonds, and also there are like the limelight lab grown diamonds have raised approx 250 crore to enter the diamond house, and also the Indian market is seeing the structural shift towards the design led value driven jewelry backed by the funding and rapid retail expansion. Also, their like adoption of the adoption is accelerating as price rise of gold and silver as mentioned. And यहाँ पे जो so that's all actually. इसके लिए like I'm not so very prepared for this हाँ, news. ये हाँ, न्यूज थोड़ा है, मतलब मैंने भी पढ़ा, हाँ, बट इट थोड़ा इज सा नॉट, रिसर्च और करना पड़ेगा. So I don't हाँ, have the idea of the. क्योंकि दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज कमिंग अप, लैब ग्रोन एक डायमंड्स इंडिया में इज ग्रोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो क्या होता है, क्या फर्क है, कितने परसेंट, क्वाइट स्मॉल मार्केट हाँ, अभी, टाइटन भी आ रहा है उसमें। हम्म, सो दिस विल जस्ट बी एन अपडेट दैट सर, दैट देयर इज समथिंग दैट इज ग्रोइंग इन इंडिया, इज ऑन लैब ग्रोन डायमंड्स, एंड डिमांड इज कमिंग फ्रॉम yes, यूएस एंड चाइना। तो काफी सारा हाँ. आया था बीच में ऑन सर दिस। अभी तो कुछ वैसे सेल्स वगैरह कुछ हुआ नहीं, बिकॉज आई हैव सर्च, कुछ वैसा तो कुछ मिला नहीं कि जैसे कि कुछ डिमांड इसका इंडिया में एग्जैक्टली बढ़ रहा है या एज सच. यूएस में बढ़ रहा है, इंडिया में नहीं हाँ, बढ़ रहा हाँ, अदर है। देन इंडिया में क्या इंडिया है, बढ़ रहा है. इंडियंस का होता ना कि हमको डायमंड ही चाहिए, रियल डायमंड ही चाहिए। हम्म. बट वही हम जब सर्च किए तब देखे कि ज्यादा कोई फर्क है नहीं, लाइक ओनली द मतलब नेकेड आई से तो स्पॉट ही नहीं किया जा सकता ये इस चीज बट को. वो इंडियंस का बट होता ना कि मन में है ना कि सेकंड में कि वो रियल में है। हाँ, ठीक हाँ, है, बट मतलब इट, या. बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ इंडिया में ना, आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर सबके पास ही डायमंड रहेंगे ना, द प्रॉब्लम इज, लेट्स से यू आर आल्सो वेयरिंग अ डायमंड, आई एम आल्सो वेयरिंग, एंड यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस। तुम्हारा है 500 रुपए का, मेरा है 5000 का,
So वो फिर people will stop buying that and they will only go for real, and you can spot real diamond, you can actually spot. So है वो मतलब हाँ, मतलब ज्वेलरी कुछ में माइक्रोस्कोप्स अलग वैसे हैं उसको हाँ डिटेक्ट मतलब करने के ऑब्वियसली लिए। कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना, शाइन अलग होगा, ये अलग होगा, तो इतना सस्ता है तो, बट इट्स Yeah. इट्स इट्स न्यू थिंग दैट इज ग्रोइंग। देखना कभी तुम भी जाके ना क्या हो रहा है ये जीवा तो में हाँ, या थोड़ा टाइम लगेगा हमको, बस थोड़ा रिसर्च टाइटन में। करना हाँ पड़ेगा इसमें। व्हाट इज हाँ। एग्जैक्टली क्यों दिखता है, सी इफ ऑन अ गोल्ड, इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोई ऑस्पिशियस वेडिंग हो गया या कोई फंक्शन हो गया, तो यू डोंट वेयर नकली डायमंड नहीं पहनते ना, वो अशुभ माना जाता है हाँ। इंडिया में। तो वो सब है, हाँ। मतलब आई हैव ऑल्सो सीन, मैंने जब मेरे भाई और सॉरी मेरे मम्मी को एंड बहन को बोला तो बोला नहीं नहीं हमको तो रियल ही चाहिए। तो आई अच्छा। हैव आई हैव बीन, तो ये कौन सा है कि क्विकली तुमको कोई अच्छा दिखना है जो लाइक अ ज्वेलरी सेट, तब ठीक है, सर बट हम पर कब पहनते हैं गोल्ड, ज्वेलरी? हाँ ज्वेलरी बोलिए। भी ओनली व्हेन देयर इज समथिंग ऑस्पिशियस, पूजा हो ऑस्पिशियस या। या वेडिंग में भी हम जाते हैं तो नकली थोड़ी पहन के जाएंगे, तो वो कौन या पहन के जाएगा? द वन हु डजंट हैव मनी टू बाय दैट, अफोर्ड दैट। या ऑफ तो कोर्स। ये अभी तक इंडिया में माइंडसेट है। मैंने पूछा मॉम को, डैड को, मॉम एंड मेरे बहन को कि क्या है फर्क इसमें, तो नहीं नहीं हमको तो रियल ही चाहिए, वाइफ को भी इनफैक्ट। तो मतलब यार यस। जाने दो फिर छोड़ो। आई सेड इट्स दिस सेगमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन, बट ऐसा है। सर द गोल्ड में क्या होता है, लाइक वी हैव ज्वेलरीज, लाइक वी बंगालीज वेयर द गोल्ड ज्वेलरीज मोर, राइट? सो यहाँ पे एक अलग जो हमने देखा है कि द डिमांड ऑफ द लाइक ज्वेलरी है विद द गोल्ड डस्टिंग और समथिंग, मतलब पूरा वो गोल्ड नहीं है। सो उसका लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा है, लाइक द लोकल रिटेल, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकल रिटेलर्स, या and they are also marketing their brands and all. So मतलब एक्चुअल गोल्ड से ज्यादा ज्यादा चला हुआ है कि लोग वो सब गोल्ड पहन इज रहे देयर, या गोल्ड इज ऑब्वियसली दे लिखा रहेगा मोस्ट access to millennials and Gen Zs seek comfort affordable luxury। तो ये वैसे हैं। ही है, मिलेनियल्स एंड जेनजीज। अगर शायद से इफ आई आस्क माय नेफ्यू तो वो बोलेगी हाँ ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, सस्ते में पहन लूंगा। बट दिस इज ओनली व्हेन ठीक है, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मार्केट में, मेरे फैमिली में तो कोई नहीं पहन रहा, सो आई कीप अवॉइड इट कि जाने तो। Yeah, so नहीं I समझता also ये don't feel that, so ये डिमांड थोड़ा नहीं और समझता रिसर्च है। करना चाहिए था। हाँ। हाँ, तो ये कोई और रिसर्च करना चाहिए, नहीं समझता है, डिमांड कर रहा है। आई थिंक वो अभिषेक के साथ हुई वाज टॉकिंग लॉट ऑफ दिस, तो आई सेड ये पता नहीं, मुझे तो नहीं जमता है कि ना इफ आई वेयर अ डायमंड व्हिच इज आई पर्सनली नो दैट इट इज नॉट गुड। तो देखा ना स्पेसिफिकली वही है, मिलेनियल्स एंड जेनजीज, वी आर मिलेनियल्स, सो आई एम मिलेनियल, सो स्टिल आई डोंट प्रेफर टू वेयर अ डायमंड व्हिच इज नॉट रियल। So actually, what's happening in this market is that if someone wants a real diamond, which is costing, let's say, $1,000, he'll go and buy the same kind of the diamond worth $1,000, but of lab grown, because उसमें उसको जो natural diamond है उसको 1 कैरेट का मिलेगा, but lab grown 5 कैरेट का उसको diamond मिल जाएगा सेम उसमें। हाँ, तो abundance उसको में भी। डायमंड की वॉल्यूम जो है वो दिखने में, विजिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके एंड सिंस इट्स अ लैब ग्रोन डायमंड में ऐसा चल रहा है कि उन लोग ने 1 पीस डायमंड रिंग बना रहे, कि मतलब यू वोंट फाइंड एनी गोल्ड ऑन दैट रिंग, बट उसकी ओके पूरी फुल, मतलब वो रिंग ही है वैसे शेप में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरल डायमंड्स में नहीं मिल पाएगी, नहीं दैट्स मिल व्हाई पाएगा, लैब ग्रोन डायमंड इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्लेस। getting a lot of traction, yeah, हो रहा है, बट somehow मतलब I don't know what is the demand, और but सर कर रहे हैं। डायमंड मार्केट मतलब बहुत ज्यादा कार्टेल ओरिएंटेड है, बिकॉज एक कंपनी डीबीयर्स करके है, डीबीयर्स ग्रुप कंट्रोल द अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री। और उन लोग ये नैरेटिव पुश नहीं कर रहे। उन ऑब्वियसली लोग हाँ की तरफ ये, से जब नैरेटिव पुश नहीं होएगा तब तक कोई कर ही नहीं सकता, मतलब ये डायमंड मार्केट में उन लोग के अलावा मूव करना कोई नहीं किसी के। हाँ करेक्ट, वो है ये कर रहे हैं ना, आई थिंक उनका नाम तनिष्क मिया जोया, फाइन इट इज लाइक चीप हाँ। डायमंड वो है। And every brand is like they are as such. They are not from like outside India. They are मतलब किसी का like they are all from India only. जो भी कंपनीज अभी तक मैंने यहाँ पे मेंशन मतलब किया हुआ है, हाँ देखा है। यहाँ पे एक रीजन आज न्यूज इसके वजह से आया ना, लिखा भी है स्पेशली विद गोल्ड प्राइसेस राइजिंग पीपल आर पुशिंग टुवर्ड्स हाँ कंज्यूमर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली उसी के लिए ये थोड़ा सा मार्केट होने का या चांसेस है कि ग्रो होने स्मॉल का। मार्केट, स्टिल अ स्मॉल हम्म। मार्केट। हम्म। सर अभी जीआईसी जो मतलब डायमंड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट है ना जो इंडिया में, हाँ दैट इज आल्सो सर्टिफाइंग द लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके वो पिछले 2 साल से, मतलब 1 साल से 2 साल से लोग करना चालू किए हैं।
लैब ग्रोन डायमंड को भी सर्टिफाइड कर रहा है, बिकॉज उससे पहले लैब ग्रोन डायमंड को लोग सर्टिफाई नहीं करते थे, नहीं कर रहे पहले थे। नेचुरल डायमंड को सर्टिफाई करते थे। ओके। तो सर्टिफिकेशन के बेसिस पे कस्टमर का ट्रस्ट और भी ज्यादा उसके ऊपर आ रहा है लैब ग्रोन डायमंड मार्केट पे, क्या समथिंग पहले पहले भी पढ़ा था मैंने एक बार, बिकॉज द समझ वेंडर नहीं इज ऑल्सो शोइंग कि ये देखो हमारे पास में जीआईसी का सर्टिफिकेशन है, एंड जीआईसी का सर्टिफिकेशन पे सबको ट्रस्ट है। इट्स क्वाइट स्मॉल, इट्स लाइक सेम ईवी की तरह ही है, कुछ है नहीं मतलब स्मॉलर। एंड डायमंड्स का मार्केट इंडिया में ऐसे छोटा ही है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव वन। गोल्ड इज मच स्टिल। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे ना आज मॉर्निंग news there is Devyani and Sapphire to merge from the and form QSR giant. So the KFC, Pizza Hut is expected to merge. So this is merger happens rarely in India. Last merger was Vodafone Idea. This can create good also. This can create, पहली बात तो merge कर क्यों रहे हैं those companies? तो बोल रहे हैं कि there will be synergies around 200 to 210 crores likely by year 2. So if that is happening, it's a good thing that दोनों अलग अलग चेन में क्यों कर रहे हो, सेम ही चलाओ. But somehow I don't like both the brands. Nor I like KFC, nor I like Pizza Hut. I think there Very is a small. decline in same store growth. So that's Same store why growth, yes. that is one of the main reasons. That's why they are planning to merge Yeah. here. And both businesses are not doing well. That's why. Not doing bad, yes. Hmm. Both are not doing well. Plus, say more than 2000 outlets है, मतलब ठीक है, expanding Thailand. Quick commerce का भी था आज news. It was about. So guys, why are you not reading all this news? Auto news तो ठीक है, it is रोज ही आते हैं. These are very important ना. They're talking about quick commerce is growing much faster than obviously the e-commerce. Difference है e-commerce and quick commerce में फर्क है. E-commerce is our Amazon, quick commerce is a Swiggy, Instamart or Zomato. So those is growing at a faster pace. उसमें भी specifically they have mentioned beauty and personal care have become one of the quick commerce breakout stars, clocking an estimated 100 million in monthly gross merchandise value, a little less than Nykaa's entire monthly sales of beauty products. So this is growing at a very healthy pace. देखना beauty products में क्या क्या आता है. ये Hosanna also, this company is behind Mamaearth, and something is happening in the beauty segment. People are preferring specifically now. What I see is तुम्हारे सलून्स में मेंस आजकल ज्यादा दिखने लग गए. पता नहीं ये मैं ही देख रहा हूँ, तुम भी ऑब्जर्व करो. Whenever go to a men's, खासकर ब्यूटी के लिए, not for haircut, क्योंकि whenever I used to go, मैं सिर्फ haircut के लिए जाने का, maximum it was a shaving, but now I can see people going out for massage or foot, maybe beauty care or facial quite frequently जाते हैं. Yeah, there is a concept of like unisex beauty parlor or हाँ, something unisex like that. beauty काफी बढ़ गए, मतलब पहले नहीं थे, because beauty parlor was sent only for women. अभी men's Yes. भी जा रहे हैं उसमें. तो ये Like डिमांड in है the ना. tier 3 cities also, it is like very much prevalent. That Yes, मतलब yes, बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है ये. correct. ये कंपनी से, ये जैसा लिस्टेड कंपनी ना, होसाना, मामाअर्थ, लॉस मेकिंग है सब, बट लिस्टेड है. नायका भी है, दैट सेंस. Okay guys, so thank you. I have a call in just 5 minutes. Thank you guys. We'll see you tomorrow at 3 p.m. Those are from EN15. Okay, and guys, please make a report and send me as soon as possible. सर हेलो, मैंने भेजी थी आपको रिपोर्ट, एक बार आप चेक कर लेते. सर अनिकेत तुमने भेजा क्या? अनिकेत सर. अनिकेत भेजा क्या तुमने? अच्छा, मैंने देखा तुम्हारा हाँ रिपोर्ट. मैं कल क्लास में बोलता हूँ, ठीक है? सर मैंने डन. भी नवंबर मंथ का भेजा था ऑटोमोबाइल का, आपने चेक किया रहेगा तो फिर कल मेरे को अपडेट हाँ देना, तो ठीक है, मैं वो हिसाब कल से मुझे, दिसंबर का कर लूंगा। ठीक है ठीक है, मुझे ओके कल ओके क्लास में सर याद कर. हम भी सर सेंड किए हैं आपको ऑटोमोबाइल का. अच्छा गाइस, त्रिशूल मुझे ना वो पीडीएफ में सेंड करो ना. ओके ऑडियो सर, ना, भेजता, पीडीएफ में. ओके भेजता हूँ सर, पीडीएफ भेज। पीडीएफ में जाना, हाँ. यस सर यस। अंकित, तुम्हारा देखा सर मैंने अनिकेत, मैं तुम्हारा रिव्यू देता हूँ, हाँ ठीक है. अंकिता अ, तुमने, ओके अंकिता ओके. प्लीज सेंड इट इन वर्ड फाइल. अंकिता वर्ड फाइल में. वर्ड ओके वर्ड नहीं, ओके सॉरी, पीडीएफ करके भेजो ना उसको. ओके. बिकॉज वो क्या होता है ना, फिर मोबाइल पे नहीं खुलता है. वर्ड खुला ना, हाँ इफ आई एम हाँ, आउट मोबाइल समवेयर, पे तो नहीं खुल रहा मोबाइल है. पे नहीं खुलता है वो, हाँ. ओके ओके, आई विल सेंड. sir, I have some query. When would be the good time for quick chat? I have a call in 2 minutes. Dishank, what happened? What is that query about? Sir, regarding okay, sir. After your call, we can talk. Fine, fine. Okay. Okay. Wanna message me or maybe send Okay, me a voice note. Okay, I will reply. okay, Okay. okay.
Okay, guys, see you tomorrow, 3 p.m. Bye, guys. Bye bye. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank Sir, you. I have saved PDF. हाँ भेजा देखता हूँ